Hello everyone, Aishka welcome you in this particular session, that is ICT. In this particular part of ICT, we will learn about the ICT basics and some topics related to it that are useful in your NET exam. So ICT is Information and Communication Technology. So let's see the contents that which I'm going to cover in this particular ICT part. First one is Information and Communication Technology, just introduction to this, then introduction to computers, then some basics of internet, intranet, audio video conferencing. Then we will learn role of ICT in higher education. Last not least, we will learn ICT and governance. At the end of these, we will see some practice questions related to your NET exam. So now let's start. So first of all, let's understand information technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सी जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो ये दो वर्ड्स की कलेक्शन से बना है. वन इज द आईटी दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड इज द सीटी दैट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज आईटी. सी आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर collecting. It is used for collecting, processing, manipulating, storing and protecting data. So with the help of information technology, we can collect data, we can process the data, we can make changes, or we can store the data with the help of IT. Then the processed data that comes out is known as information. So next is the CT, that is communication technology. So communication technology refers to the use of technology for telecommunication, broadcasting media, or you can say audio visual processing, and for transmitting information. Information transfer करने के लिए use करना through any medium like wired or wireless networks. So now term comes the ICT. So as I explained earlier that it is a combination of IT and CT in which वो क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, एंड अगर हम शेयरिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ और विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क्स एक्सेट्रा. सो सम एग्जांपल्स आर देयर, दैट इज ऑनलाइन शॉपिंग, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज, और nowadays like we are doing work from home, so it is done with the help of ICT. Now let's see the features of ICT. So these are some features which we understand. So first is the transforming the society. The first feature is that ICT की हेल्प से एक्चुअली क्या हुआ कि अब जैसे हर एक चीज हम ऑनलाइन कर रहे हैं. सो ये क्या कर रहा है, जो हमारा एनवायरमेंट है, हमारी सोसाइटी, उसको टोटली डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या कहने लग गए हैं, टुडे सोसाइटी इज नोन एज इंफॉर्मेशन सोसाइटी. सेकेंड, स्पीड. जैसे अब कम टाइम में हर एक चीज हम ऑनलाइन देख सकते हैं. अगर किसी से बात करनी है तो हम ऑनलाइन बात कर सकते हैं, और जल्दी जल्दी, लाइक ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है. सो नेटवर्क की हेल्प से, आईसीटी टूल्स की हेल्प से हम चीजों को बहुत इजीली कर सकते हैं. लाइक इसमें रियल टाइम इंटरेक्शंस हैं, जैसे चैट्स की फॉर्म में, वॉइस कॉल्स है, वीडियो कॉल्स है, एक्सेट्रा. इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आईसीटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. आपको कुछ भी पेपर सर्च करना है या लाइक पेपर्स बनाना है related to your synopsis or thesis part, so you can done this with the help of ICT in a very easy manner. Versatility means कि like आप एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कर पा रहे हैं with the help of ICT. Like one can play a video, work on Excel sheet, हमें डाउनलोड करना है, सॉन्ग सुनने हैं, so एक ही टाइम पे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. Next is the precision. Precision means as there are no delays and distortions while recording the data in computer.
so the chances of error or miscommunication are very less or nil. Cost, see the cost is you can say very it can be expensive, but you can say as it is giving many advantages to us, तो जो यूजर है इसको अफोर्ड कर सकता है. नेक्स्ट इज द स्टोरेज. तो द स्टोरेज डेटा कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली. डेटा को हम स्टोर करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, लाइक इन द टर्म्स ऑफ हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, और लाइक अब तो जैसे क्लाउड पे है कि अगर मुझे डाटा जो है ऑनलाइन ही कहीं स्टोर कराना है, जैसे मुझे गूगल ड्राइव पे स्टोर कराना है या मैं ड्रॉप बॉक्स यूज कर सकती हूँ. सो बहुत सारी ऐसी इसने फैसिलिटीज प्रोवाइड. इट फैसिलिटेट्स लर्निंग. हाउ? सी इन टीचिंग अगर हम बात करें यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग, it implies the use of slides, like nowadays, like because of corona classes are going online. So हम लोग जैसे पढ़ा रहे हैं with the help of slides और presentation videos. So ये सारी चीजें कैसे बन पाएंगी? ये सब क्या प्रोवाइड कर रही है? लर्निंग प्रोवाइड कर रही है. और क्या है? दिस विल लीड टू स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग. स्टूडेंट सेंट्रिक मतलब कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सब काम हो रहा है यहाँ पे. सो जिसने आईसीटी में टोटली हमें हमारी जो लर्निंग है उसको इंक्रीज किया है. The next is meaning of information and communication technologies. So here I'll just include a definition that is according to UNDP, that stands for United Nations Development Program, that ICTs are basically information handling tools such as varied set of goods, applications and services that are used to produce, store, process, distribute and exchange information. So ये छोटी सी डेफिनेशन है लाइक दिस पार्ट की आईसीटी कर क्या रहा है. आईसीटी में हमारे पास बोथ लाइक पुराने टूल्स भी हैं और नए टूल्स भी हैं. पुराने टूल्स की अगर आप बात करो तो उसमें हमारे पास रेडियो, टीवी एंड टेलीविजन है, और न्यू टूल्स की अगर बात करें तो हमारे पास कंप्यूटर्स, सैटेलाइट्स, वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट. Now, ICT and education. How ICT and education are related to each other? See, यहाँ मैंने 3 terms लिए हैं, like ICT education, ICT supported education, and third is ICT enabled education. तो ये तीनों काफी हद तक सेम लगती हैं, बट तीनों में बहुत डिफरेंस है. लाइक ICT education जो है इसमें हम लोग स्किल्स को सिखा रहे हैं, लाइक किसी को हम ट्रेन कर रहे हैं, आईटी के बारे में एजुकेशन देते हैं, तो दैट इज आईसीटी एजुकेशन. आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन और कोर्स, जिसमें एजुकेशन के अंदर लाइक एजुकेशन करते हुए हम आईसीटी टूल्स को यूज कर रहे हैं, दैट इज आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन. एंड लास्ट दैट इज आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन, मींस प्योरली जो ये पार्ट है ये तो प्योरली आईसीटी टूल्स को यूज करता है. कोई भी प्रोग्राम यूज करना है, कोई भी लेक्चर डिलीवर करना है या कोई भी कम्युनिकेशन करना है, तो वो टोटली प्योरली आईसीटी टूल्स पे ही बेस्ड होगी. नेक्स्ट, नाउ these are some objectives of ICT that are, the first one is the improving access to the system through the online education, improving the quality of teaching especially across remote locations. अगर कोई दूर है बट आप अपनी बात लाइक कुछ भी स्टडी करना चाहते हैं तो इजीली अंडरस्टैंड करवा सकते हैं. इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथनिंग सिस्टम्स प्रोसेस, मेजरिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक आप ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करवा सकते हैं, प्रॉपर स्टूडेंट्स ऑनलाइन टर्न कर सकते हैं. जैसे काइंड ऑफ जो ये कोर्स है आप इसको गूगल से लर्न करते हैं, सो ये भी काइंड ऑफ क्या है आईसीटी का ही पार्ट है. सेकेंडली उसमें ये डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको लाइक लाइव सेशंस ही देखने हैं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेक्चर्स रीड कर सकते हैं, सुन सकते हैं और देन उसको लर्न कर सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं. देन एनालाइजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, ऑप्टिमाइजिंग रिटेंशंस एंड इम्प्रूविंग प्लेसमेंट्स, एनालाइजिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, प्लेसमेंट, एप्लीकेशन वॉल्यूम, सोशल मीडिया मेट्रिसेस और ब्रांड. सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे आईसीटी के. आईसीटी एक्चुअली में क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स इसके
इसने प्रोवाइड किया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. नाउ some strengths of ICTs. What are the various steps? Like first is the individualization of learning. So individualization of learning means that people learn as individuals. अकेले अकेले लर्न कर रहे हैं, क्योंकि लाइक अब जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो हर पर्सन घर पे बैठ के स्टडी कर रहा है. सो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम ग्रुप में लर्न नहीं कर रहे, हम सिंगल लर्न. Interactivity. Through interactive feature, the learner can relate to the content more effectively. Like interactive means जैसे अब वीडियोस हैं, so आप अगर आगे पीछे लाइक कोई पॉइंट आपसे मिस हो गया, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, कहीं पर भी, तो वो समझने के लिए एक इजी वे हो जाता है. Distance and climate insensitive. Teaching and learning could be taken out of the conventional education system of schools and colleges, जैसे अब हम यूज कर रहे हैं. So teaching can be individualized and geoclimate conditions, that combination of geographical distances and climate condition. So ये सब भी हम रिड्यूस कर सकते हैं कि सपोज आज लाइक नेटवर्क वर्किंग नहीं कर रहा, पर जो लेक्चर है वो तो वहाँ पर रहेगा ना. ऐसा तो नहीं है कि लाइव सेशन है तो आज मुझे अगर मैं ड्यू टू नेटवर्क और ड्यू टू वेदर इशू मैं नहीं लगा पाई तो फ्यूचर में भी मुझे वो नहीं मिलेगा. आईसीटी की हेल्प से मैं इजीली उसको देख सकती हूँ. मोर इकोनॉमिकल, हायर स्पीड ऑफ डिलीवरी एंड वाइडर रीच. सो increase in number of learners, the unit overhead cost come down, even though when the initial investment may be high. The speed भी क्या है, बहुत faster है. Multiple reaching functions and diverse audience. So using the ICTs with the help of like especially for the computers and जितनी भी इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, हम लोग इजीली लर्न कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. यूनिफॉर्म क्वालिटी. इफ कंटेंट इज वेल प्रोड्यूस्ड एंड इज ऑफ गुड क्वालिटी, देन द सेम क्वालिटी कैन बी डिलीवर्ड टू द रिच एंड पुअर. आईसीटी की हेल्प से ये भी हुआ लाइक कि अगर कोई रिच या पुअर है वो भी इजीली लर्न कर पाता है, क्योंकि कॉस्ट जो है लाइक अगर एरियाज की भी बात करें कि कोई अर्बन में बैठा है, कोई रूरल एरिया में है, तो आईसीटीज की हेल्प से वो भी लेक्चर्स को इजीली सुन पा रहा है और लाइक इसका बेनिफिट ले पा रहा है. Now, as ICT offers many advantages or many strengths, so there are some limitations also that ICT comes with. First is high infrastructure and startup cost. So cost of setting the any environment can be high. Little attention towards individual differences in order to achieve economics or scale. Like the higher the quantity, the lower will be the cost. So cost कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटेंट कॉमन बना देते हैं. So we do not take into account the individual differences among students. Accessibility issue. Not everyone has equal access. So therefore, not everyone benefits equally from the use of ICTs. Like यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है किसी के पास मोबाइल ना हो, किसी के पास लैपटॉप ना हो, तो इस केस में वो कैसे एक्सेस करेगा इन आईसीटी टूल्स. आईसीटी इज बेसिकली अ डिलीवरी सिस्टम. सो विद द हेल्प ऑफ आईसीटी हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट है वो समझाया जा रहा है. डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस एवेल्यूशन. समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस बाय यूजिंग द आईसीटी as a comparison to the classroom assessment. Continuous training requirement. See, जब अब ICT tools आए हैं, like ICT tools हम various tools यूज कर रहे हैं या ICT जब से यूज कर रहे हैं, तो इसमें रोज नए नए चेंजेस होते हैं और इनफैक्ट जो टीचर्स हैं उनको भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है. Now, in view of ICT, education can be classified into three main categories. हमने तीन मेन कैटेगरीज में डिफाइन किया है. फर्स्ट इज ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग. और अगर बात करें एडिशन तो मैंने दो और ये इंक्लूड किए हैं, दैट इज फेस टू फेस, सेल्फ पेस्ड एंड ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग.
So let's understand this. First of all, e-learning or electronic learning. देखो, जैसे it is also known as online learning, जैसे हम ऑनलाइन कुछ भी लर्न कर रहे हैं. So with the field of advanced learning technology, which deals with both the technologies and methodologies in learning using the network or multimedia technologies, distance education provided the base for e-learning development. A-learning. So e-learning can be on demand. It overcomes timing, attendance and travel difficulties. So e-learning actually means कि जो ऑनलाइन हम लर्निंग करते हैं, क्योंकि इससे ये बेनिफिट है आपको लाइक कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना नहीं पड़ता है. ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या है कि इसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरह की लर्निंग प्रोवाइड की जाए. लाइक जब कॉलेज बीच में स्टार्ट हुआ था तो स्टूडेंट्स अगर ऑफलाइन में आ रहे थे तो तब भी डाउट्स प्रोवाइड किए जा रहे थे. जैसे ही लाइक लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन डाउट सेशंस और ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की. दैट मीन्स दोनों काइंड ऑफ लर्निंग वो कर सकते हैं. ब्लेंडेड लर्निंग में आपका ऑनलाइन भी आ जाता है और ऑफलाइन भी आ जाता है. फेस टू फेस लर्निंग. फेस टू फेस मीन्स रेफर्स टू द लर्निंग दैट जो बेसिकली हम ट्रेडिशनल क्लासरूम में यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम सामने इंटरेक्शन करते हैं, सामने प्रेजेंटेशन देते हैं और कुछ भी डाउट होते हैं तो हम उसी टाइम पूछ सकता है स्टूडेंट या टीचर भी साथ के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं. सेल्फ पेस्ड लर्निंग. सेल्फ पेस्ड का मतलब है काइंड ऑफ जैसे आपका मूडल है. मूडल में क्या है, आपको रोज के रोज लेक्चर्स मिलते हैं जो रिकॉर्डेड हैं, आप इसको खुद से देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, देन कोई भी डाउट्स होते हैं देन वो आप लाइव लेक्चर में पूछते हैं, जो भी लाइव सेशन होते हैं. दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ पेस्ड लर्निंग. Now last is the distance learning. Distance learning means जो आप घर पे बैठ के कर रहे हैं, कि आपने कहा कि लाइक हम कोई स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं ना कि मैंने एडमिशन नहीं लिया, लाइक मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से करना है. डिस्टेंस एजुकेशन मीन्स कि आप घर पे बैठ के विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स और लाइक विद द हेल्प ऑफ योर इंटरनेट हेल्प आप सारी की सारी स्टडी करते हो. So ICT also allow for creation of digital resources like digital libraries where students, teachers and professionals can access research material, course material from any place and at any time. कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से भी कोई इसको एक्सेस कर सकता है, किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है. So such facilities allow the networking of academians and researchers. So sharing of scholarly material leads to quality enhancement in teaching and learning. Thank you. Now let's have some questions. First is the statement: the study, design, development, implementation, support or management of computer-based information system, particularly software applications and computer hardware, refers to IT. So what is the answer? IT, that is information technology. Next we have two statements and we have to tell that which statement is correct. That is information and communication technology is considered a subset of IT. The right to use a piece of software is termed as copyright. No. So in this both statements are false. So neither one nor two. Next is, which of the following statements regarding the term ICT is true? ICT is an acronym that stands for no. ICT की full form ये नहीं है. ICT की full form है Information and Communication Technology. Second, converging technologies that exemplify ICT includes the merging of audio, visual, telephone. So सारी की सारी टेक्नोलॉजीज आ जाती है ICT में, तो जिससे हम कनेक्ट होते हैं. तो ये करेक्ट है आपका, दैट इज Q only. Good morning everyone. Welcome to this session on ICT, that is Information and Communication Technology. My name is Shikha and I am Assistant Professor in Sanatan Dharam College in the Department of Computer Science and Applications. So let's start this session. First of all, a simple introduction to computers.
सो एज यू ऑल नो, जो कंप्यूटर है वो हर फील्ड में यूज हो रहा है. कंप्यूटर के लिए अब कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पर हम इसका यूज नहीं करते. सो लेट्स सी व्हाट इज कंप्यूटर. As we all know that it is a definition of computer, that what is a computer, that is it is an electronic device that accepts data, perform operations on data and presents the result, then stores the data or results and mute it and give you desired results. So here it has four primary operations that are input, processing, output and storage. So first of all, let me explain you one cycle. Computer follows a cycle, that is IPO, that is input, processing and output. How? See, अगर हमें कोई भी काम करना है, like if I want to make a assignment, for that purpose मुझे पहले input क्या होगा, मुझे सारा का सारा कंटेंट कलेक्ट करना पड़ेगा. प्रोसेसिंग क्या होगा, मुझे उस सारे कंटेंट को एक जगह पे सबको लिखना पड़ेगा. देन एट द एंड मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, मुझे एक असाइनमेंट बन के तैयार हो जाएगी. सो कंप्यूटर कह लीजिए या आप कोई भी टास्क कह लीजिए, हम आईपीओ को फॉलो करते ही हैं. इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर अगर बात करें तो हमारे पास इनपुट क्या है, दैट मीन्स एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर. प्रोसेसिंग मीन्स performing operations on that particular data. Then output is that if you want to present the results, so for presenting that you need output devices. And there is also a storage, that means if you want to store the data or save the data in your machine, so we use storage devices for that purpose. Now first of all, let's see how what is data. For understanding the terms about that is input, output, storage devices, let's understand what is data. So what is data? See, if I simply write some numbers 1, 2, 3, 4, so it is a data. It is simply a data. But if I say these are the roll numbers of students, then it become a information. तो डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा कलेक्शन हो सकती है, फैक्ट्स की, फिगर्स की, एंड डेटा कैन बी प्रोसेस्ड टू क्रिएट यूजफुल इंफॉर्मेशन. डेटा कैन बी यूज्ड बाय मैनेजर्स टू परफॉर्म effective and successful operations of management. Data is very useful for generating reports, graphs and statistics. For example, like student fill an admission form when they get admission in the college. फॉर्म में क्या क्या होता है, फॉर्म में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है, लाइक स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, फादर नेम है, एक्सेट्रा. और इसका पर्पस क्या होता है कि हम सारा का सारा डेटा मेंटेन करके रख सके स्टूडेंट का. नाउ इंफॉर्मेशन एज आई टोल्ड, लाइक इफ आई सिंपली सेज दैट it is 1 2 3, these are the numbers, then it is a data. But when I say these are the roll numbers of students, then it became information. So the manipulated and processed form of data is called information. So it is used for making decisions. Then what is an example? The data collected from sensors is used to generate different type of information. So that is the example of information. Now next is the characteristics of the computer. So what are the various characteristics? See, characteristics actually क्या हैं जो हमारे कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं. फीचर्स क्या है, तो फीचर्स इसने मुझे अलाउ किए हैं जिनकी हेल्प से जो कंप्यूटर है बहुत ही पॉपुलर है. सो क्या है हमारे पास? सबसे पहला फीचर है स्पीड. स्पीड की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर जो है हमें बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है. लाइक कुछ भी है, अगर मुझे कुछ एनालाइज करना है, कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम लोग उसको बहुत कम टाइम में कर सकते हैं. You can say computer can perform million of operations on data in 1 second. वही अगर एक काम ह्यूमन करे तो उसको कुछ काम करने में टाइम कंपेयर टू ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियस. दैट मीन्स कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है ये अपने आप से एग्जीक्यूट करता है. डेटा और इंस्ट्रक्शन जब भी
सेकेंडरी डिवाइसेस मीन्स जहाँ कहीं पे स्टोर होती है, वहाँ से फेच की जाती है, they immediately get stored into RAM. अभी इन सब टर्म्स के बारे में फर्दर सेशंस में देखेंगे that what is RAM and what are the secondary devices also. तो कंप्यूटर की एक ऑब्जेक्टिव और यू कैन से फीचर जो है वो ये भी है कि कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक है. नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज. कंप्यूटर हैज internal as well as external storage. So you can say the stored data and programs are available anytime for processing. No feelings, as computer has no feelings. Like जो कंप्यूटर है वो कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है कि कंप्यूटर ना तो कभी थकने वाला है, ना ही ये है कि लाइक इसने बोला कि मेरा मन नहीं है. बट एज अ ह्यूमन, जो ह्यूमन है ह्यूमन तो कह ही देगा ना कि नहीं राइट नाउ मैं काम नहीं कर सकता. सो कंप्यूटर में एज सच ऐसा नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. कंसिस्टेंसी. सी कंसिस्टेंसी मींस लाइक जो कंप्यूटर है, अगर आप कोई भी टास्क रिपीट भी कर कोई अगेन एंड अगेन, तो ऐसा नहीं है कि रिपीट करने के बाद वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाए. कंसिस्टेंटली वो कोई भी काम कर रहे हो तो वो करेक्ट मैनर में ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करे. Communications. So today's computer is mostly used to exchange messages as we are using the online platform for learning. So computer is the type for communications. Diligence. See, computer diligence feature is that कि computer like काफी लंबे टाइम तक काम कर सकता है. ये कभी ये नहीं बोलेगा like मैं थक गया. It doesn't get tired while working after hours or it perform the operation the same accuracy as well as the speed as the first. कोई भी इसकी स्पीड पर या फिर इसकी रिजल्ट्स कोई भी इफेक्ट नहीं आता. Now next are the generations of computer. See what are the generations? That actually the generation to generation हमारे पास टोटली 5 generations है. इन 5 generations में जो कंप्यूटर्स में चेंज हुआ वो ये था, एक तो कंप्यूटर की स्पीड में चेंज हुआ. कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बढ़ती गई, इंक्रीज होती गई, और एक्यूरेसी बढ़ती गई. क्योंकि लाइक क्या हुआ, द न्यू टेक्नोलॉजी हमने क्या क्या किया, improve the speed, accuracy and storage. Also you can say जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आए थे तो कंप्यूटर्स बहुत लार्ज साइज के हुए. बट अब क्या हुआ, कंप्यूटर्स जो है आपने देखा पॉकेट पीसी पे आ, वहाँ एक लार्ज साइज का दैट मीन्स एक कंप्यूटर, एक रूम साइज का कंप्यूटर जो था हमने अब एक पॉकेट की फॉर्म में भी बना दी. सो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ पैरामीटर्स थे जब जनरेशन टू जनरेशन हमने वेरी किया कंप्यूटर में चेंजेस. सो वी हैव 5 जनरेशंस, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो लेट्स डिस्कस दीज जनरेशंस वन बाय वन. सो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. सी how large it is as compared to our pocket PC. Now in first generation computers we use ENIAC, EDSEC, ADVAC, UNIVAC, these terms. Machines belong to the first generation of computers. What are the advantages of that? These computers were fastest of their time. उस टाइम पे बहुत fastest. They were programmed using machine learning. और जो मेन चीज थी वो ये था, हम यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब को यूज करते हैं. कैन बी क्वेश्चन लाइक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, ICT, क्योंकि यही एक मेन चीज है जिसके बेसिस पे भी ये डिफरेंशिएट करती है जनरेशंस. नाउ द डिसएडवांटेजेस व्हाट आर दैट? अनरिलायबल, वेरी कॉस्टली, जनरेट लॉट ऑफ हीट, साइज बहुत बड़ा था, एसी की जरूरत थी, नॉन पोर्टेबल मींस कि बहुत बड़ा साइज था. So it is not easy to carry that computer. Lot of electricity consume करते थे. Maintenance required थी proper. Now next, the second generation computer is the example. In this generation we use transistors. So transistors were cheaper, consumed less power, more compact in size, more reliable and faster than the first generation. So इसने वो सारी एडवांटेजेस थी जो मेरी फर्स्ट जनरेशन की लिमिटेशंस.
यहाँ हमने यूज किया ट्रांजिस्टर्स का, रिलायबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। सी जनरेशन टू जनरेशन हम जब कंप्यूटर में चेंजेस कर रहे हैं तो हमें बेसिकली यही देखना चाहिए ना कि हमें इम्प्रूवमेंट क्या करनी है, जब जो मुझे प्रीवियसली प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी वो अब ना हो। सो स्मॉलर साइज हो गया एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, जनरेट लेस हीट, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन। यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड, प्रीवियस वर्क था वहाँ मशीन लर्निंग से काम कर। डिसएडवांटेजेस अगेन कॉस्टली था, एसी नीडेड और मेंटेनेंस। नाउ द third generation is the IC. In this particular generation we used ICs, that is integrated circuits in place of transistors. So single IC has many transistors, resistors and capacitors. So इसने क्या किया, साइज स्मॉलर किया, रिलायबल और एफिशिएंट। अगेन जो प्रॉब्लम्स मुझे सेकेंड जनरेशन में थी वो हमने थर्ड जनरेशन में ठीक कर, फास्टर किया, लेस हीट हो गई, स्मॉलर साइज, स्मॉलर। आप अगर चेक करें तो जितनी थर्ड जनरेशन तक हम आए तो हम साइज स्मॉलर करते जा रहे हैं, क्योंकि एक रूम के साइज का कंप्यूटर कैरी करना प्लस अगेन एंड अगेन उसमें चेंजेस करना, मॉडिफिकेशंस करना, मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल है। इसकी डिसएडवांटेज क्या थी, स्टिल कॉस्टली और एसी। नेक्स्ट वी मूव टू द फोर्थ जनरेशन, that is the VLSI. यहाँ पर हमने VLSI that is very large scale integrated circuits को यूज किया। So these are having about 5,000 transistors and other circuit elements and their associated circuits on a single chip. So fourth generation computers more powerful, compact, reliable and affordable. As a result, it gave rise to personal computer revolution. इन्हीं के बाद से हमारे जो सिस्टम थे हम पर्सनल कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर की डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। सो नंबर वन एडवांटेज इज VLSI टेक्नोलॉजी यूज, वेरी चीप, पोर्टेबल एंड रिलायबल, यूज ऑफ PCs, दैट इज फर्स्ट। नाउ अगेन व्हाट आर द एडवांटेजेस, स्मॉलर इन साइज, साइज छोटा हो गया, वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड, very large internal as well as external storage capacity. And what are the various disadvantages? That is highly sophisticated technology required for the manufacture of microprocessor chips. ये limitation थी। Next जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं प्रोसेस, मेन ड्रॉबैक क्या थी, कंप्यूटर्स की अपनी थिंकिंग पावर नहीं थी, have not their own thinking power. These are totally depending upon the instructions given by the users. So fifth generation में हम क्या करना चाह रहे हैं, आइडियल कंप्यूटर बनाना चाह रहे हैं जो है नहीं। साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं और क्या क्या फीचर्स में डालना चाहते हैं, हैविंग देयर ओन थिंकिंग पावर, सोच सके खुद से, डिसीजंस ले सके, कैपेबिलिटीज ऑफ रीजनिंग, लार्ज कैपेसिटी ऑफ इंटरनल स्टोरेज एंड एक्स्ट्रा हाई स्पीड प्रोसेसिंग। तो ये चीज़ें अब जो फंक्शनिंग में है कि साइंटिस्ट है वो उस पर वर्क कर रहे हैं, एक ऐसी मशीन बनाएं जिसमें हमारे पास ये सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल। मेन फीचर्स ULSIC, दैट इज अल्ट्रा लार्ज। अब काम किसमें करना है, अभी तक हम वेरी लार्ज पे कर रहे थे, वेरी स्मॉल पे कर रहे थे, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर जब बात होगी तो AI की बात होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आप उसको एक तरह से इंटेलिजेंट मशीन को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स, वेरी पावरफुल एंड कम्पैक्ट कंप्यूटर्स एट cheaper costs. Now overall, what are the advantages of computer? See, with the help of computers, easy processing of complex tasks can be done. It saves lot of time. Error in data processing are minimized because as a human कुछ ना कुछ मिस्टेक कर सकता है, but जो मशीन है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करती। It has helped in making communication by using internet. It stores, retrieves and processes a large amount of data. It helps in multitasking of various.
these are the various advantages of computers. Now, in the third session, let's understand the classification of computers. Now, after understanding the basics of computer and some features, now let's see some classification of computer. See, in the classification part, I have different things, different options, that classification on the basis of based on purpose, then based on data handling, and based on size and functionality. So based on purpose, I have two types, that is general purpose and for specific purpose. Based on data handling, further divided into analog and digital, and the third one is hybrid. The main one, that is based on size and functionality, we have microcomputers, mini computers, mainframe, and supercomputers. Let's discuss these all one by one. First of all, we have microcomputer. Microcomputer is the smallest, least expensive of all the computers. They have smallest memory and less power. These computers are also known as PC, that is personal computers. The most common type of microcomputer is desktop computer. Some examples are desktop, laptop, notebook, computers, etc. Next is the mini computers. So these are general purpose computers, smaller than our mainframe computers. इनका जो साइज है वो मीडियम होता है और अप्रोक्सीमेटली इतना साइज ऑफ एरिया ये ऑक्युपाई करती है. स्लोअर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आगे की जो सेशंस है उसमें कवर अप करेंगे. स्मॉलर बैकअप स्टोरेज, लिमिटेड हार्डवेयर एंड लेस मेमोरी देन मेनफ्रेम्स. Mainframe computers, it is also slower, less power, less expensive than supercomputers. So very large in size. See, it is the example of mainframes computer. Mainframes are used by banks and many more business to update inventories. So these are some examples of mainframe computers. Next are the supercomputers. Supercomputer are the fastest, most powerful, most expensive. It has the ability to recover automatically from failures. तो जो सुपर कंप्यूटर्स हैं बेसिकली हम कहते हैं कि इनको वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, या आप कह सकते हैं दीज आर यूज्ड इन साइंटिफिक एप्लीकेशंस और प्रोसेसिंग ऑफ जियोलॉजिकल डेटा. So one of the most powerful supercomputer today is this, and these are some other names of supercomputers. Now here is the summary on the basis of size, that supercomputer, these are the characteristics, that largest, fastest, powerful, most expensive, used for advanced scientific research. Mainframes are less powerful and less expensive. It is used to handle all kinds of problems, whether scientific or commercial. Mini computers are smaller, as the name, used in scientific laboratories, research institutions, engineering plants. Microcomputers are also smallest, cheapest, and relatively least powerful. So these are used for a variety of tasks. Now next is the category of, that is based on work. So on the base of work, we have three types. First is the analog computer. In analog computer, we have speedometer, odometer, seismograph, etc. In digital computers, it comes with the 0-1s forms, like everything is now comes in the digital form, like digital watch, etc. Hybrid computer are the mixture of both this analog and digital computer. So one of the example of this hybrid is, that is ECG, electronic cardiograph. Next, based on the purpose, we have two types. The first is general purpose computers. General purpose computer can perform any kind of job with equal efficiency. Special purpose is one that is designed to perform only one special task, as the name implies. General means can do any type of work, but special means can do a single task, or you can say the program or instruction set is permanently stored in such a machine.
नाउ कम्स द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि टुडेज एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, सो हर फील्ड में कंप्यूटर्स जो है वो यूजफुल है. So let's discuss some applications of computer. The first is the education. In the field of education, computer plays a very important role. Like nowadays, आप देख सकते हैं जैसे due to corona, student की जो classes हैं वो भी online चल रही है. So that is the application of computer. इसमें हमारे पास CBT, that is computer based training, computer edited instructions, ये सब include है. Entertainment, for entertainment is the main application of computer that आप लोग इसमें गेम्स खेल सकते हो, तो गेम्स प्ले कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, लाइक सॉन्ग सुन सकते हो, तो ये सारी एंटरटेनमेंट में आ जाएगी. साइंस, लाइक फॉर रिसर्च पर्पसेस हम इसको यूज कर रहे हैं, डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं. सो एक कंप्यूटर की एप्लीकेशन है. पब्लिशिंग, सो पब्लिशिंग की फील्ड में भी कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. लाइक आप देख रहे हैं ई बुक्स की फॉर्म में जो हमें डाटा आजकल अवेलेबल है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ publishing. Agriculture, in the field of agriculture, computer is playing very important role. Like agricultural scientists are computer for analyzing the agricultural data. So analyze करना चाहे, like अगर कोई भी जो उनकी फसलें हैं उनसे रिलेटेड कुछ चेक करना चाहते हैं, या कोई जो चीज उनकी फसलों के लिए अच्छी हो, तो वो सब चीजें भी with the help of computer they can analyze. गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट कैसे यूज कर रही है? गवर्नमेंट रन्स द कंट्री बाय मेकिंग पॉलिसीज एंड प्रोवाइड सिटीजंस विद अप टू डेट इंफॉर्मेशन. सो आप कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट की भी सारी पॉलिसीज हैं, ऑलमोस्ट हर एक पॉलिसी जितनी भी हैं इनकी वेबसाइट्स पे हैं. सो वेबसाइट्स किसके थ्रू देख पाते हैं? कंप्यूटर्स के थ्रू. होम, अब होम हमारा जो घर है, आप देख रहे हो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है. कंप्यूटर एक तरह की नीड बन गया है, चाहे एजुकेशनल टूल कह लीजिए आप, या फिर आपने लेटर्स लिखने हैं, अपने रिकॉर्ड्स बना के रखने हैं, मूवीज देखनी है, इंटरनेट चलाना है, तो हर एक टाइप की जरूरत की लाइक एक जो है कंप्यूटर बन गया है कि कंप्यूटर से हम ये सारे काम इजिली कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट मूव टू द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. सी कंपोनेंट्स मीन्स कि लाइक किन किन पार्ट से जो है हमारा कंप्यूटर बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल we have three main parts, that is the input unit, or you can say input devices, output unit or output devices, and CPU, that stand for central processing unit. And here is the simple diagram of components. Like here's the input unit, then output, and this whole is the CPU. So it consists of control unit, ALU, memory. So we will discuss all this in detail. Now, first of all, we have input devices, or you can say input unit. So computer will only respond when a command is given to the device. जिन सोर्सेज की हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, लाइक अगर मुझे कुछ टाइप करना है तो आई विल यूज कीबोर्ड, या फिर मुझे कर्सर को मूव करना है तो मैं माउस यूज करती हूँ. तो यही चीजें क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं. लाइक यही कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर. कीबोर्ड से आप एंटर कर रहे हैं नेम एंड कैरेक्टर्स, और examples are barcode readers, magnetic ink character readers, so touch screens. So these are different examples of your input devices. Here are some more examples of input devices, and these are the pictures of some input devices, that keyboard, mouse, joystick, trackball, microphone, webcam, touch screen, scanner. So these are some important input devices. नेक्स्ट इज द आउटपुट डिवाइसेस. सो जब हम लाइक कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, लाइक कुछ भी मैं इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रही हूँ, लाइक मैंने टाइप किया, सो वो कहाँ पर डिस्प्ले होगा? दैट इज द आउटपुट. जो रिजल्ट है वो कैसे डिस्प्ले होगा, कहाँ डिस्प्ले होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस. जैसे लाइक व्हेन वी विजिट एन ATM, हम लोग अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं, तो क्या होता है? फाइनली आपके पास मनी आ जाती है, तो दैट इज द आउटपुट. Some output devices are there, that is the monitor, plotter, printer, speaker, headphones, projector. So these are the example of output devices.
Now let's discuss some output devices which are important. So first is the monitors. Monitor is very popular and most commonly used output device. Monitor consists of a screen, electronic components that produce the output on the screen for a temporary period. So most monitors use personal computers, display text, graphics and video information. Second type is plotters. प्लॉटर्स जो होते हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइसेस हैं, लाइक जो बड़े बड़े पैनल्स डिजाइन किए जाते हैं उनको जो प्रिंट निकाला जाता है वो विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर्स ही किया जाता है. स्पीकर, हमें सॉन्ग सुनने हैं तो साउंड के लिए हम स्पीकर को यूज करते हैं. प्रिंटर, जब कभी भी कोई भी चीज आपको रिटन फॉर्मेट में चाहिए सो हम उसको यूज करते हैं प्रिंटर्स के. प्रिंटर्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज द इम्पैक्ट प्रिंटर, second is the non-impact printers. So impact printers prints characters, graphics on the paper with the strikes of hammer on a repeat. Like example, typewriter. Typewriter है वो इसका example है impact printer का. So non-impact printer क्या होते हैं? The printers that produce the output on a paper. जो पेपर पे प्रिंट करते हैं without striking the paper. जैसे कि इनके कुछ फीचर्स हैं. ये फास्टर होते हैं किनसे? इम्पैक्ट प्रिंटर से. क्वालिटी अच्छी होती है, कोई नॉइज नहीं आता जब हम प्रिंट करते हैं. इनके जो एग्जांपल है दैट आर लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स एक्सेट्रा. और इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल था हमारा डॉट मैट्रिक प्रिंटर. नेक्स्ट इज द डॉट मैट्रिक प्रिंटर. इनको हम इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप बोलते हैं. So dot metric printer makes a hard copy by printing one character at a time. Non-impact is further divided into different parts. That is the inkjet printer, laser printer. So because जो inkjet printers हैं इनको inkjet इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम ना स्प्रे करते हैं इंक इस पे पेपर के ऊपर. So they being of non-impact type, they cannot be used to produce multiple copies. बहुत सारी कॉपीज नहीं आती है एक प्रिंटिंग में. सो लेजर प्रिंटर इज द फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट है, हाई क्वालिटी है. बट जैसे कि इसने फास्टेस्ट भी दिया, क्वालिटी भी अच्छी दी, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है, मोस्ट एक्सपेंसिव. नाउ सेकेंड कंपोनेंट, नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज आफ्टर डिस्कसिंग द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट और आउटपुट यूनिट्स, देयर इज द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. It is also known as the brain of computer as it controls operations of all parts of computer. It consists of two components, that is the ALU and control unit. CPU में ये हमारी main चीज consist होती है. ALU stands for arithmetic and logical unit and here control unit. And here is the memory. So now CPU, memory unit. When once a user enter data with the help of input device, कंप्यूटर क्या करता है, उसको स्टोर करवाता है. कहाँ पर? मेमोरी यूनिट में, ताकि अगर मुझे बाद में जरूरत हो तो मैं इसको यूज कर सकूं. तो ये जो स्टोरेज है हम इसको टू टाइप से करा सकते हैं, या तो परमानेंटली या फिर टेम्परेरी. परमानेंटली कराना है तो मुझे उसके लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज करने हैं, और अगर टेम्परेरी कराना है तो उसके लिए तो हमारे पास रैम है. ALU, as the name implies, is basically used for mathematical calculations like addition, subtraction. Control unit will control all the tasks, like it is responsible for coordinating tasks between all the components of computer system. Now, the computer memory. Memory consists of many parts. We have three parts. First is the primary, secondary, second is the secondary, and third is the cache memory. Primary further divided into two parts, RAM and ROM. Secondary further divided into these parts. So now let's discuss these types of memory one by one. First of all, we have primary memory. So जो प्राइमरी मेमोरी है बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं कि डाटा जो भी काम चल रहा है, लाइक इट होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच आर करंटली इन यूज, जो करंटली वर्किंग में होगा. और जैसे ही डाटा लाइक आपका लॉस हो जाता है, जैसे ही पावर स्विच ऑफ होती है,
सो इसमें हमारे पास दो टाइप्स के आते हैं, दैट इज रैम और रोम, वो इसकी कैटेगरी में है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक ये एक फीचर है इसका वोलेटाइल मेमोरी, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी नोन एज मेन मेमोरी, डाटा लॉस हो जाता है जैसे ही पावर स्विच ऑफ होती है। फास्टर है सेकेंडरी मेमोरी से। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी, तो आपकी मशीन में प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। नाउ further primary memory is divided into different parts, that is the RAM, random access memory, and ROM, read only memory. Now RAM stands for random access memory. Basically fastest है, memory available होती है इसमें, but expensive है ये। So RAM में बस ये जो disadvantage है that is कि for some time, like limited period के लिए होता है, जब तक पावर चल रही है तब तक डाटा सेव रहेगा, अदरवाइज डाटा क्या होता है आपका इरेज हो जाता है। सो रैम की भी दो टाइप्स हैं, एस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो है वो फ्लिप फ्लॉप से बनता है, और आप ये कह सकते हैं एस रैम जो है कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, जबकि डी रैम जो है उसमें वन ट्रांजिस्टर एंड वन कैपेसिटर होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि डी रैम किससे बना होता है, विच स्टोर बिट वन बिट ऑफ डेटा। So, due to small size of each cell, one DRAM can have large number of cells. ROM is read-only memory. तो नेम से जैसे पता चल रहा है कि सिर्फ रीडिंग के लिए यूज किया जाता है। Data to be stored into ROM is written during the manufacturing phase itself. So, ROM is slower, hence cheaper than RAM. इसमें डाटा रहता है, it retains its data even when power is switched off. So, that's why हम ROM को non-volatile जबकि जो रैम है वो वोलेटाइल। नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम, दैट इज प्रोम, ईप्रोम एंड ईईप्रोम। सो इनकी फुल फॉर्म्स कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, दैट इज प्रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईप्रोम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Now a small difference between RAM and ROM. RAM basically stands for random access memory and read-only memory. It is used to read data quickly, run applications, and ROM basically for storage. Volatile है, ये non-volatile है। Types जो है इसकी static और dynamic RAM है, और हमारे पास ROM के 3 types हैं, that is PROM, EEPROM and EEPROM. Next comes to the secondary memory. सेकेंडरी डिवाइसेस मींस कि जब आप डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर करा के रखना चाहते हैं, सो ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है, और नॉन वोलेटाइल है तो दैट मींस परमानेंटली स्टोरेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट इज द हार्ड डिस्क। सी हार्ड डिस्क आपको पता है कि आपकी मशीन में भी होती है, और आप एक्सटर्नल लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। सो नॉन वोलेटाइल है क्योंकि परमानेंट स्टोरेज रहेगा। कहाँ पर होती है, आपकी मशीन पर होती है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकेंडरी स्टोरेज टाइप्स, इज दैट इज टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज बेसिकली स्टोर्ड डेटा परमानेंटली। जब भी आपको डाटा परमानेंटली स्टोर कराना है तो हम हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क आपकी मशीन में होती है, प्लस अगर आप एक्सटर्नल लगाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। कंपोनेंट्स हार्ड ड्राइव के जो हैं, दैट इज इट इंक्लूड अ हेड एक्चुएटर, रीड राइट एक्चुएटर आर्म, प्लेटर, रीड राइट हेड। सो ये सब चीज़ें होती हैं जो हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं किसके, हार्ड ड्राइव के। देन नेक्स्ट होता है हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव, दैट इज SSD, जो हम बेसिकली अब प्रेफर करते हैं अपनी मशीन पे, जो हमारी मशीन की स्पीड को बढ़ाता है। सो इट इज़ ऑल्सो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मीडियम, दैट मीन्स इट इज़ यूज टू होल्ड एंड एक्सेस डाटा, और इट डज नॉट हैविंग मूविंग कंपोनेंट्स। सो ये आपको ऐसी एडवांटेजेस देता है जैसे कि फास्टर एक्सेस, या फिर कोई डिस्टर्बेंस ना होना ऑपरेशंस में, लेस पावर कंजम्पशन एंड मेनी मोर। नेक्स्ट होता है पेन ड्राइव।
पेन ड्राइव भी एक तरह का सेकेंडरी डिवाइस है जिसको बेसिकली हम डेटा स्टोर कराने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक मुझे कोई प्रिंट आउट चाहिए, सो मैं पेन ड्राइव में डाटा ट्रांसफ़र करके देन मैं किसी भी प्रिंटर से उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। SD card, that is secure digital card. It is most often used in portable and mobile devices जैसे कि स्मार्टफोन्स और डिजिटल कैमरास. So you can remove it from your device and see the thing stored in it using a computer. अगर आप देखना चाहें अपनी मशीन पे तो देख सकते हैं इसका डेटा. नेक्स्ट होता है कंपैक्ट डिस्क. सो कंपैक्ट डिस्क इज अ पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. ये भी स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, बट अब हम प्रेफर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम SD कार्ड यूज़ कर लेते हैं या पेन ड्राइव्स यूज़ कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू CDs. DVD. सो DVD इज़ शॉर्ट फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. सो इनकी जो फुल फॉर्म्स है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. लाइक SD की फुल फॉर्म ये थी सिक्योर डिजिटल कार्ड. सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. देन DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और यू कैन से डिजिटल वीडियो डिस्क. तो ये दो नेम्स हैं इसके. इसको भी हम डेटा स्टोर कराने के लिए यूज़ करते हैं. और जो मेन चीज़ है वो ये है कि DVD was co-developed by Sony, Panasonic, Philips in 1995. Now types of DVDs हमारे पास मेनली 3 टाइप्स है. फर्स्ट इज़ द रीड ओनली, जिसमें अगर एक बार डाटा आपने स्टोर कराया तो सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हैं. राइटेबल मतलब आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं. सो इट अलाउज यू टू रिकॉर्ड और राइट इन्फॉर्मेशन टू द DVD. एंड जो DVD RW दैट इज री राइटेबल और इरेजेबल. इसमें क्या है कि आप जो डाटा है वो कैन बी इरेज्ड. अगर आप एक बार डाटा जो लिखा है आप इरेज करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है और ये चीज़ आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं. नेक्स्ट अनदर मेमोरी जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द कैशे मेमोरी. कैशे मेमोरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. कैशे मेमोरी जो बेसिकली जब भी कैशे का नाम आता है तो मीन्स है कि आपको एग्जीक्यूशन वो फास्ट देने वाला है. सो कैशे की हेल्प से होता क्या है, अगर हम बात करें सिमिलर टू रैम है बट एक्सट्रीमली फास्ट है देन रैम. सो नॉर्मली यूज्ड बिटवीन रैम एंड CPU. कैशे करता क्या है, आपके काम को बहुत लाइक स्पीड बढ़ा देता है. क्योंकि क्या होता है लाइक अगर कोई काम रिपीट हो रहा है तो वो हम ना कैशे मेमोरी में लिखवा देते हैं, जिसकी हेल्प से अगर नेक्स्ट टाइम सेम रिक्वेस्ट आती है तो वो डायरेक्ट जहाँ पे सेव्ड है वहाँ से ना उठ के कैशे से उठ के आता है. सो ओवरऑल जो कैशे की मेन एडवांटेज है वो ये है कि टाइम सेव करता है लोडिंग का और डायरेक्टली आपके प्रोग्राम्स को चला देता है, जिससे क्या होता है एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है. सो हियर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन cache and RAM. So that is the first is the RAM is volatile memory which could store the data as long as the power is supplied. Cache जो है smaller है बस faster है. Size of RAM is greater but जो cache का size है वो smaller होता है but जो functioning है वो fast होती है. RAM बहुत expensive कहते हैं हम but cache इतनी expensive नहीं है. RAM holds programs data that are currently executed. जबकि जो कैशे है जो फ्रिक्वेंटली बार बार यूज हो रहा है वो डेटा रखता है अपने पास. इट इज नॉट फास्टर एज कम्पेयर टू कैशे, इट इज फास्टर. कैशे मेमोरी इंक्रीजिंग द एक्सेस ऑफ स्पीड ऑफ CPU. रैम इज फास्टर देन अ हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क और जस्ट एनी फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया. CPU रीड्स कैशे मेमोरी डेटा बिफोर रीडिंग द रैम, जबकि यहाँ पे क्या होता है CPU रीड्स डेटा आफ्टर रीडिंग कैशे मेमोरी. सो जो कैशे है दैट इज जर्नली इंटरनल बट जो रैम है वो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल बोथ होता है. नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. लाइक व्हाट इज द फादर ऑफ कंप्यूटर दैट इज द चार्ल्स बैबेज. फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग. बेसिक आर्किटेक्चर कंप्यूटर का किसने बनाया था तो जॉन वॉन न्यूमैन ये पर्सन थे. फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थे दैट इज लेडी एडा लॉवेले.
First electronic computer was ENIAC, and then the father of email is Raymond Samuel Tomlinson. So इसमें जो मेन है वो आप ये ईयर याद कर सकते हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर इनके जो नेम्स हैं. द नेक्स्ट इज द अंडरस्टैंडिंग डेटा मेजरमेंट्स. डेटा मेजरमेंट्स मीन्स कि जो लाइक हम स्टोरेज करवाते हैं, अब उनकी कैपेसिटी कैसे होती है. सो हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं डेटा को मेजर करने की, केबी, एमबी, जीबी, और सबसे बड़ी जो है दैट इज टीबी. सबसे छोटी कुछ इससे आपको पता चल जाएगा कि सबसे छोटी इज केबी, फिर एमबी है 1 MB इज इक्वल टू 1000 KB, 1 GB is equal to 1000 MB, and 1 TB is equal to 1000 GB, that is gigabytes. Now these are the basic units of measurements: kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, then petabyte होता है, फिर hexa, zettabyte and yottabyte. So ये सब आपको याद रखना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और ये इनकी बेस वैल्यूज होती है. अगर बेस 2 वैल्यू बात की जाए, या बेस 10 की फॉर्म में बात की जाए, या फिर बेस 16 वैल्यू की फॉर्म में बात की जाए. नेक्स्ट इज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सी हार्डवेयर सिंपली हम ये कहते हैं जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, दैट आर द हार्डवेयर पार्ट. एंड सॉफ्टवेयर जो मशीन में है, जैसे लाइक अभी ये पीपीटी भी मैं चला रही हूँ तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, और जिस पर चला रही हूँ लाइक लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ तो दैट इज़ अ हार्डवेयर. सो हार्डवेयर it refers to mechanical device that makes up computer. Computer hardware में क्या होती हैं? Interconnected electronic devices that we can use to control computer operations, input and output. तो example क्या है? CPU, keyboard, mouse, hard disk, etc. are the examples of hardware. Second is the software. Now software क्या होता है? अब देखो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ड्राइव्स कंप्यूटर टू डू सम टास्क इज अ प्रोग्राम. और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस आर प्रोग्राम्ड इन कंप्यूटर लैंग्वेज, ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर. सो सॉफ्टवेयर हमारे पास हमने 2 कैटेगरीज में डिफाइन किए हैं. फर्स्ट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा काइंड ऑफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सो इट डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर डिवाइसेस, आप कह सकते हो ये कहाँ पर फंक्शनिंग करता है? हार्डवेयर डिवाइसेस में. एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए. इसके जो एग्जांपल्स है दैट इज विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स एंड एक्सेट्रा. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जो हमें लाइक एनवायरनमेंट तो दिया हमें जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस का सिस्टम सॉफ्टवेयर ने, बट अब वो चीज़ रन कैसे करनी है? लाइक जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, ये चीज़ें मुझे यूज़ करनी है. इनके लिए जो मुझे एनवायरनमेंट चाहिए दैट इज कम विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो इट इज़ डिज़ाइन फॉर बेनिफिट ऑफ यूजर्स टू परफॉर्म वन और मोर टास्क. एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ओरेकल एंड मैनी मोर. नेक्स्ट अ टर्म इज ट्रांसलेटर. अब ट्रांसलेटर क्या होता है? देखो ट्रांसलेटर का एक्चुअली जो काम है, इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि असेंबलर और कंपाइलर जो है वो इसका एक एग्जांपल है. सो ये क्या करता है? प्रोग्राम का कोड लेता है, उसको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, और क्या करता है? अलाउइंग द कंप्यूटर टू रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट टास्क द प्रोग्राम नीड्स टू बी डन. मतलब हमारी चीज़ों को जो हमने लिख के दिया उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. सो इसके जो एग्जांपल है दैट इज असेंबलर एंड कंपाइलर. नाउ कंपाइलर क्या करता है? इट विल कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++ है, उनको मशीन के कोड में कन्वर्ट करती हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. असेंबलर जो है वो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन कोड में. और इंटरप्रेटर क्या करता है? इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट डायरेक्टली. सो एक स्मॉल सा डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में. कंपाइलर एक प्रोग्राम को इकट्ठा कंपाइल करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है आपके प्रोग्राम को. सो नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस. सो फर्स्ट इज इन अ कंप्यूटर राइट
generally consist of 8 bits. That is 1 byte is equal to 8 bits. Which of the following is not an input device? Microphone is an input device, keyboard is an input device, joystick is also an input device, but monitor is not an input device. Which of the following is an open source software? So here we have Mozilla Firefox. It is an open source. Which of the following enables us to send the same letter to different persons? अगर हमें एक टाइम पे सेम मैसेज मल्टीपल पर्सन्स को भेजना है तो ये ऑप्शंस मेल मर्ज प्रोवाइड करता है जो वर्ड में प्रेजेंट होती है. The process of copying files to a CD-ROM is burning. Cache is a type of memory circuitry that holds the computer startup routine. तो startup routine के बारे में इंफॉर्मेशन रोम के पास होती है. Which of the following correctly list computer memory types? So computer memory types हमारे पास साथ में पूछे हैं. देखो memory types तो सारे ही हैं, बट उसने सबसे हाईएस्ट में कहा है टू लोएस्ट स्पीड. तो स्पीड सबसे पहले हाईएस्ट होती है कैशे की, फिर रैम की और फिर किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. दैट मीन्स द आंसर विल बी थर्ड. With regard to a word processing software, the process of combining static information in publication together with variable information. मतलब हम जब मेल मर्ज में काम करते हैं तो उसमें डायनामिक इंफॉर्मेशन कैसे डालते हैं. लाइक मैंने सेम मेल मल्टीपल पर्सन्स को भेजनी है तो वो उनके नेम्स अलग अलग मर्ज किए जाते हैं. सो वो ऑप्शन है मेल मर्ज. डीवीडी टेक्नोलॉजी यूजेस एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डाटा. सो डीवीडी की फुल फॉर्म भी हमने डिस्कस की थी. दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल disk. Now data storage hierarchy consists of, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है बिट, बाइट, सबसे पहले बिट, फिर बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डेटाबेसेस. लाइक बिट्स की बात करें तो वो 0-1 की फॉर्म में होती है. फिर बाइट की बात करो तो वो 8 बिट का एक बाइट बनाता है. फील्ड की बात करो तो जैसे मैंने नाम लिख दिया, जैसे नेम. रिकॉर्ड की बात करो तो नेम में साथ में अगर मैंने वैल्यू भी दे दी तो दैट इज अ नेम. फाइल आपने इसमें काफी सारे रिकॉर्ड्स और भी ऐड कर दिए. एंड डेटाबेस जब आप इसको एक स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं. A new laptop has been produced that weighs less, is smaller and uses less power than previous laptop models. So ये किसकी हेल्प से हो पाया कि जो नए लैपटॉप्स हैं एक तो काफी लेस है, लेस वेट है एंड जो भी है लाइक अच्छी जल्दी से काम करते हैं. सो ये सब एसएसडी की हेल्प से हो पाया. दैट इज सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव. हेलो एवरीवन. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ आईसीटी सेशन नंबर 4 वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक टर्म्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो, video, conferencing. So let's start. So first of all, in the basics of internet, let's understand the term internet is a worldwide telecommunication system that provides connectivity of millions of others. Like with the help of internet, हम लोग आपस में connected हैं. हर एक चीज जो है इंटरनेट के थ्रू ही हम एक्सेस कर पा रहे हैं. चाहे लाइक कोविड के वजह से जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं. सो ये सब चीजें विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही हो पाई हैं. सो इट अलाउज कंप्यूटर यूजर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अक्रॉस डिस्टेंस. चाहे इसमें जो जो टूल्स आ सकते हैं दैट इज द आईसीटी बेस्ड डिवाइसेस सच एज मोबाइल, टैब और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सो इंटरनेट बिगन इन 1969. So you have to remember this year for your exam. And as the US Department of Defense, एक प्रोजेक्ट था दैट इज ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. ये एक एजेंसी है जिन्होंने क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था. सो वर्ल्ड वाइड वेब, यूजुअली कॉल्ड द वेब फॉर शॉर्ट, is a collection of different websites you can access through the internet. That means आपको कोई भी वेबसाइट जब एक्सेस करना है so you have to write ना like www.google.com. so for this is the world wide web, www stands for. Then
Another term is ISP, that is Internet Service Provider. So it offers a variety of services for a variety of prices like web page access, email, web page hosting, etc. नेक्स्ट अ स्मॉल टर्म इज ब्राउजर. सी ब्राउजर क्यों इम्पोर्टेंट है, लाइक अगर मेरी मशीन पे ब्राउजर नहीं है सो मैं कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं कर सकती. एंड ब्राउजर के जो एग्जांपल्स हैं दैट आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो प्री इंस्टॉल्ड होता है आपके लैपटॉप पे या आपकी मशीन पर. ब्राउजर एक फ्री सॉफ्टवेयर पैकेज है जिससे आप क्या कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू टू व्यू वेब पेजेस, देख सकते हो कुछ भी ग्राफिक्स लाइक वीडियोस देख सकते हैं, मोस्ट ऑनलाइन कंटेंट. सो इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी. देन वेब ब्राउजर की हमने बात की, अब है हमारे पास वेब पेज. वेब पेज क्या है, जो आपको ब्राउजर पे दिखेगा, व्हाट यू सी इन योर ब्राउजर व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट. सो वेब पेजेस लाइक क्या हुआ, एक वेबसाइट है उसमें मल्टीपल वेब पेजेस हो सकते हैं. हो सकता है किसी वेब पेज में इमेजेस हो सकता है किसी वेब पेज में टेक्स्ट. नेक्स्ट स्मॉल टर्म इज दैट द URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. दीज आर द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट. जो भी आपकी वेबसाइट है उसका एड्रेस होता है. सो मेनली इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. लाइक द प्रोटोकॉल इज द पोर्शन इन दिस, जो भी हम लिखते हैं, लाइक हम लिखते हैं ना कुछ इस तरह से, लाइक HTTPS. So here is the protocol, that is Hypertext Transfer Protocol, and S is for secure link. Here is this. So the host or top level domain, that is हम use करते हैं .com, .net, .edu. The most common is the .com or .in, .org. And the file name, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है. लाइक अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, so मैंने लिखा google.com. Google is the name and the .com is the domain. So domain is जो लास्ट में आपके होता है, like that .com, .in. डोमेन नेम हमेशा यूनिक होता है. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक डोमेन अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लाइक आपने देखा है कि अगर मेरी वेबसाइट है सपोज abc.com, सो abc.com की कोई अनदर वेबसाइट नहीं हो सकती. नेक्स्ट दीज आर सम टॉप लेवल डोमेन नेम्स, जिसमें .com जो है बेसिकली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, .edu फॉर एजुकेशनल, .gov फॉर US गवर्नमेंट, देन .int, .net फॉर नेटवर्किंग प्रोवाइडर्स, .org फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. So these are some top level domains. Then these are the domains named according to the country codes, like AU for Australia, IN for India, UK for United Kingdom, and US for United States. Now we have domain name system, that is the DNS. So what is that? See, DNS जो है basically हम यूज करते हैं, इट वॉज डेवलप्ड टू ट्रांसलेट द न्यूमेरिकल एड्रेसेस इनटू वर्ड्स. सो इंटरनेट एड्रेस हैज 4 फील्ड्स with numbers that are separated by the dots. So this type of address is known as IP address. आप देखते हैं like 192.68.72.11 ऐसा कुछ. So वो जो होता है that is the name of IP address. SSL. SSL stands for Secure Socket Layer. So it is a secure encryption protocol. First of all, I want to tell you one thing, that protocol means कि कुछ rules and regulations जो हम apply करते हैं, like अपने websites पे, like हम जब website चलाते हैं तो हम लिखते हैं HTTPS, that is one of a kind of protocol, Hypertext Transfer Protocol. Then SSL is a secure encryption web protocol which is used to make data safe, as the name also includes the word secure. Web hosting. Web hosting means like आपने कोई वेबसाइट डिजाइन किया, वेबसाइट बना लिया, बट वो आप होस्ट नहीं किया, लाइक बना के आपने अपनी मशीन पे रखा हुआ है, बट जब तक आप होस्ट नहीं करेंगे, उसका कोई डोमेन नहीं लेंगे, तो बाकी सब यूजर्स उसको देख नहीं पाएंगे. वेब सर्वर. सी सर्वर और क्लाइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. सर्वर एक ऐसी मशीन है जहाँ पे बहुत सारा डाटा स्टोर होता है.
और क्लाइंट एक ऐसी मशीन है जो डिफरेंट यूजर्स यहाँ से डाटा को एक्सेस करते हैं. सो वेब सर्वर क्या है? इट रेफर्स टू अ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम. लाइक अब जैसे कोई बैंकिंग अकाउंट की अगर हम बात करें, किसी सेम बैंक में मेरा भी अकाउंट है और किसी और पर्सन का भी अकाउंट है. सो जो उनका सर्वर होगा दैट इज द वेब सर्वर, कि हमारा डाटा एक वेब सर्वर पे सेव है ओवर द नेट. क्योंकि सपोज अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन अंबाला में की और मेरा अकाउंट कहीं और था, तो वहां पर भी वो रिफ्लेक्ट करेगा. सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ वेब सर्वर. नॉर्मल सर्वर की हेल्प से ऐसा नहीं हो सकता. Then some more basic terms related to this, that is the hypertext markup language, that is HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language, which is a programming language used for making web pages. One is XML, that is stands for Extensible Markup Language. So you have to remember all these names. So the difference between XML and HTML is that with the help of HTML you can just make static websites, but with XML you can done a lot of dynamic work. And HTML is a combination of HTML and XML. So it stands for Extensible Hypertext Markup Language. Next is HTTP. So HTTP is a protocol. You can say it is a client server protocol which is used to exchange hypertext documents. Now, basics of intranet. So what is that? Intranet is a private network that is contained within an enterprise. So it may consist of many local area networks, that is LAN or WAN. So main purpose of intranet is to share company information and computing resources among employees. Like एक company है मेरी, so within the company जो network use हो रहा है, that is comes under in this category. So today's working environment often means colleagues are no longer present in the same room. So that's why, like अगर हम buildings की बात करें, so एक building में ही मुझे एक network use करना है, so for that we use this term. For larger enterprises, allow users with their intranet to access the public internet through firewall servers. One term is extranet. So it refers to the network within an organization using internet to connect to the outsiders. With the help of internet, जब आप outsider से भी connect होना चाहते हैं, उस term को हम क्या बोलते हैं? extranet. Now let's understand basics of email. So electronic mail is a method of exchanging messages between people using electronic devices. So it is invented by Ray Tomlinson. This thing I've also tell in the last lecture. So the first email was done in the 1916 as by mid 1970s. Email stands for electronic mail, that is, it will consist of messages which are sent and received using the internet. So we have three webmail providers, that is Yahoo, Microsoft Outlook and Google, that is Gmail. So in email we have these main fields, that is from, date, to, subject, CC, BCC. So let's see what are these. So before understanding this, let's understand the protocols used in the process of email. First is the POP3, that is Post Office Protocol 3. Some protocols for email protocols. Like first we have POP3. In this, it stands for Post Office Protocol 3. It is a simple standardized protocol that allows us to access mailboxes. अगर इंटरनेट पे लाइक मुझे मेल अपने एक्सेस करना है, तो ये प्रोटोकॉल है, इसकी हेल्प से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. देन हमारे पास जो है बेसिकली सेकेंड होता है IMAP, दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. इट इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द मेल्स टू यूजर्स. और ये जो है ये सपोर्ट करता है दोनों ही, लाइक ऑफलाइन भी और ऑनलाइन मोड्स भी, जो भी ईमेल्स की होती है.
नेक्स्ट होता है SMTP, ये मेन होता है हमारा और नेम से ही जैसे है, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज अ सिंपल टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल which is used like to send the mail, or you can say it is a mail. It is a protocol that can only be used to send mails. तो ये मेल ये प्रोटोकॉल ऐसा है जो मेल सेंडिंग के लिए यूज किया जाता है as the name. So next is as we have discussed the basics of email, that is from, date, to, subject, CC. So what are these things? So first of all, this is the important part, as 3 questions were asked on this in last 2 exams. So first is the BCC, stands for blind carbon copy. So you have to learn the full form of this, and for what purpose it is used. Like when you send an email to only one person, you type the address in 2 fields. And when you send a message to more than one person, you have the option to enter in CC and BCC fields. So BCC is blind carbon copy and CC is carbon copy. So CC message is an email that is copied to one or more recipients. Blind carbon copying is a useful way to let others see an email you sent without the main recipient. So it is faster than sending the original messages and then forwarding the sent messages to the other recipients. So next we have basics of audio and video conferencing. So when a number of participants of a meeting use telephonic instruments to communicate with each other, then it is known as audio conferencing. And when 2 or more people use digital platforms for communication, collaborate with each other for achieving a task or for achieving a common goal, then it is known as video conferencing mode of communication, or you can say face to face. क्योंकि इसमें हमें हमारी वीडियो भी प्रेजेंट हो रही होती है, वीडियो भी हमें शो हो रही होती है, फोटोज दिख रही होती है. So that's why it is called face to face conferencing. So there are many online tools for this. Most popular video conferencing softwares are Skype, Zoom, Cisco WebEx, Go Meeting, Zoho, Workplace by Facebook. So these are some examples for video conferencing software. So first question is about, that is, which of the following is not a web browser? So web browser is what, जो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है अपनी वेबसाइट चलाने का. So Internet Explorer, Mozilla and Chrome, these are the main web browsers, but Yahoo is not a web browser. So which of the following is a type of malware intentionally inserted into a software system? Intentionally means जानबूझ के जो प्रॉब्लम क्रिएट करे. मालवेयर वो होता है जो आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे. So logic bomb is the example of that. It is a piece of code that is intentionally inserted into a software system that will set off a malicious function. So for example, a programmer may hide a piece of code, किसी ने मेरी मशीन पे एक ऐसा कोड डाल दिया जिससे कुछ फाइल्स डिलीट होनी स्टार्ट हो जाए, तो वो किसी ने इंटेंशनली किया, जिसको हम लॉजिक बम बोलते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप? इंस्टेंट मीन्स कि साथ के साथ आपके मैसेजेस जो है वो डिलीवर होते हैं. व्हाट्सएप, गूगल टॉक, वाइबर, तीनों ही ऐसे हैं कि जिनसे आपकी जो इंस्टेंट मैसेजिंग होती है. सो आंसर इज 4, दैट इज ABC. नेक्स्ट, एन असिलेक्टेड ईमेल मैसेज सेंड टू मेनी रेसिपिएंट्स. जैसे आपने देखा कि सेम मैसेज बहुत सारे पर्सन्स को जाता है जो रिलेवेंट नहीं है या आपकी मशीन को नुकसान पहुंचा सकता है, वो कहाँ पे होता है? स्पैम में. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ वेब पेज एड्रेस? सो वेब पेज एड्रेस की हमने बात की थी, वो URL होता है, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर profit businesses? So for business purposes, I have told you that .com domains are used. So these are some questions related to this particular part. Hello everyone. Now
we will discuss the role of ICT in education in this particular session. That is the main topic of this session is role of ICT in higher education. So here I am showing by a picture that 6 reasons to use ICT in education for society demands, then curriculum update, ICT in subjects, continuous learning, communication in cyberspace. So let's discuss it in detail. Now, with a view to improve the quality of education using the ICT, एक हमारे पास हमने क्या किया, एक नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT लॉन्च किया गया और ये काम कर रही है इसके ऊपर कि जो ICT है वो कैसे हमारी एजुकेशन के ऊपर, जो हायर एजुकेशन है उसके ऊपर कैसे इफेक्ट डाले। और ये चीज़ इन्होंने बहुत सारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए। सो इनके जो नेम्स है दैट इज वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर योर नेट एग्जाम। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो फर्स्ट इज these are the digital initiatives in higher education by MHRD UGC. So first is the Swayam. Swayam is one of the best digital initiatives in higher education. Swayam actually क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप different types of courses learn कर सकते हैं, online courses. So it is offering online courses and covering schools 9 to 12 to postgraduate. So हर टाइप के कोर्सेज है यहाँ पर। सेकेंड इज स्वयं प्रभा। इट इज ऑल्सो अ गुड इनिशिएटिव लाइक डायरेक्ट टू होम, जिसको हम DTH कहते हैं कि कौन सा चैनल, डायरेक्ट टू होम अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री। सो यहाँ पर भी आप अगर कुछ भी लर्न करना चाहते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं अवेलेबल है। नेक्स्ट इज NDL, दैट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये जितने भी हैं इनके कम से कम नेम्स तो आपको पता ही होने चाहिए कि मोस्टली क्वेश्चंस कई बार इनके नेम से रिलेटेड ही पूछा जाता है। सो NDL इज अ प्रोजेक्ट व्हिच इज यूज्ड टू डेवलप अ फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग सोर्सेस। सो हमारे पास जो NDL है इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल ऐप। सो अगर इसकी आप वेबसाइट देखना चाहें तो वो ये है, दैट इज ndl.gov.in। Spoken tutorial. Spoken tutorial is another initiative done by government, and by this you can learn many programs. और also यहाँ पर जो है हमारे पास different languages में भी programs available है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में है या हिंदी में है। So multiple languages है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि 22 languages यूज की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट फोजे, इसकी फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। सो ओपन सोर्स है इसके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। इसकी वेबसाइट ये है, इसमें आप जैसे स्पोकन ट्यूटोरियल्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, सो ये सारी चीजें यहाँ पे। सो हियर वी यूज TBC, दैट इज टेक्स्ट बुक कंपेनियन, which is a collection of code for solved examples of standard textbooks. So about 2000 college students and teachers have participated in this activity. Next we have virtual lab. See, virtual lab project is to develop a fully interactive simulation environment to perform experiments or collecting the data and answer questions to access the understanding of knowledge. So here there are about 225 such labs operational with more than 1800 experiments and benefited more than about 15 lakh students. Next we have eYantra. So it is a project for enabling effective education across engineering colleges in India. More than 275 colleges across India have benefited from this. और जो इसकी वेबसाइट है दैट इज www.eyantra.org as open source content. शोध गंगा is a initiative that is does the name point to denote digital repository of Indian electronic thesis. This is the name. So you have to remember this.
एक्चुअली जो शोधगंगा है वहां पर आपको वेरियस टाइप्स ऑफ अगर लाइक थीसिस आप सर्च करना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, सो थीसिस के फॉर्मेट जैसे कि पीएचडी थीसिस है वो सब अवेलेबल है. सो फॉर रिसर्च स्कॉलर्स एक बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है, काफी हेल्पफुल है ये साइट फॉर रिसर्च स्कॉलर्स के. नेक्स्ट इज शोध गंगोत्री. Under this, research scholars, research supervisors in universities are requested to deposit an electronic version of a proof synopsis submitted by research scholars to the universities for registering themselves to the PhD program. So यहाँ पर जब भी आप रजिस्टर होते हैं PhD में, आपके जो भी synopsis होते हैं जो सबमिट करते हैं approved synopsis, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है. Then we have e-शोध सिंधु. So here this allows access to best educational resources in the world using the digital mode. Next, we have eVidwan. So it is a database of experts and national researchers network that is initiated by this particular. So main objectives of eVidwan are will collect academic and research profiles for scientists, faculty, research scientists, quickly and conveniently provide information about the experts. It establish a communication directly with the experts, identify peer reviews for review of articles, create information exchanges and networking opportunities among scientists. So these are some objectives of eVidwan. The next one we have is Talk to Teacher. So Talk to a Teacher is developed by IIT Bombay, an initiative by National Mission on Education through ICT. It is also funded by MHRD, so to provide free access to a few selected graduate and postgraduate courses taught at IIT Bombay by different faculty members. Campus connectivity. So establishment of 1 Gbps connectivity to universities so has been provided under this. In this, we have 600 universities have been connected through 1 Gbps optical fiber. Next, we have is NAD. NAD बेसिकली जो है ये MHRD का एक प्रोग्राम है जिसमें बेसिकली क्या होगा, जो स्टूडेंट की डिग्रीज होंगी, जो भी लाइक पर्टिकुलर स्टडी किया होगा किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, तो वो सब इस पोर्टल पे अवेलेबल होगा. सो जितने भी लाइक आपके सर्टिफिकेट्स हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के, जो भी इशू हैं वो सब इस आईडी में प्रेजेंट होंगे जो ये डिपॉजिटरी बनाई जा रही है. देन नेक्स्ट इज द ई-कल्प. इट इज एन इनिशिएटिव फॉर क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन इन इंडिया. सो इन दिस it has successfully achieved the following project on the completion of its phase 1, that is the digital online content for learning design with e-learning programs, digital design resource database including the craft sector, social networking for higher learning, design inputs for product of National Mission in Education through the ICT. Next, we have some digital initiatives for the school education. First is the e-Pathshala. So e-Pathshala is basically a joint initiative of MHRD, Government of India and National Council of Education Research and Training has been developed for showcasing and disseminating all educational resources like textbooks, audio, video, periodicals and a variety of other print and non-print materials for students, teachers, parents, researchers as well as for educators. So also it provides access to digital textbooks for all classes, graded learning materials and enables participation in workshops, contests, festivals, exhibitions, etc. Next we have is eBasta. It is a framework to make school books accessible in digital form as e-books to read and used on tablets. So easily यहाँ पर ऑनलाइन हमें e-books मिलती हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं. मेन आइडिया क्या है यहाँ पे कि is to bring various publishers and schools together on one platform. Next one is सुगम्य पुस्तकालय.
this one. So in this particular is an online library. So here you can see many books available for the blind people. The books accessible to the blind people with low vision or the person with any other print disability. For those, this particular initiative has been done. Next we have Diksha, National Teacher Platform branded as Diksha. It is an initiative by MHRD, Government of India. In this, you can say it is a state-of-art platform built to host OER, that is Open Educational Resources, and tools for teachers in schools, teacher educators in teacher education institutes, and student teachers in TEIs, that is Teacher Education Institutes. Saransh is a tool for comprehensive cell review analysis for CBSE affiliated schools and parents. So now next we have some questions related to this particular session. So first is NMEICT stands for. So it stands for National Mission on Education through ICT. Next we have MOOC stands for, that is Massive Open Online Course. Next, the purpose of value education is best served by focusing on. So मतलब हमारी जो एजुकेशन है वो मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस क्या है? कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय अ सोशल ग्रुप और कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज. सो मेन एजुकेशन ये है कि जो ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बता सके, मतलब पर्सन को समझा सके कि कैसे बिहेव करना है. Next, we have cloud computing has the following distinct characteristics. The service is hosted on the internet. Yes. It is made available by a service provider. Yes. It computers and predicts rain when the weather is cloudy. No. The service is fully managed by the provider. Yes. So A, B and D. So here is the option, that is the fourth one. Next we have what are the advantages of choice-based credit system that is introduced by UGC for higher education institutes. So its focus is on student-centric education. Yes. It allows students to choose interdisciplinary and intradisciplinary courses. Yes. Then makes education at par with global standards. Exactly true. बिल्कुल सही है ये. Then makes it easy to estimate the performance level of students in terms of marks. No. ये जो बेसिकली है स्टूडेंट क्रेडिट स्कूल लाइक सिस्टम जो था चॉइस बेस्ड, तो ये हमने इन चीज़ों के लिए किया था. स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन है, ये नहीं कि परफॉर्मेंस लेवल इन टर्म्स ऑफ मार्क्स को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया जाए. इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट. देखो अभी बात करेंगे चॉइस बेस्ड है, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो अपने आप ही देगा स्टूडेंट्स को फॉर स्टडीज एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स. सो A, B, C and E. So this is the correct option. Hello everyone. Now we are going to discuss our next session on the ICT, that is ICT and governance. So let's see. First of all, we have an introduction part, that is here I just want to explain that the E in the e-governance stands for electronic. That means कि जो गवर्नमेंट ने लाइक कुछ साइट स्टार्ट की, गवर्नमेंट को जो गवर्नेंस की सारी चीज़ें थी, लाइक जो भी लाइक वो पॉलिसीज प्रोवाइड करना चाह रहे थे या कुछ एक जो भी अपने टूल्स थे वो प्रोवाइड करना चाह रहे थे, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली जो पॉसिबल हुआ हमारा ICT की हेल्प से. सो हेयर e-governance stands for electronic. That means it is basically associated with carrying out the functions and achieving the results through utilization of ICT. किस चीज़ के? जो गवर्नेंस की चीज़ें हैं. So the major objective is to support and simply governance for all the government agents, citizens and businesses. जैसे आप देखें तो हर एक चीज़ लाइक अब जैसे कि अगर लोगों की पेंशन की इंफॉर्मेशन है वो भी सब कुछ अब ऑनलाइन विजिबल होता है हमारे पास. सो वो विद द हेल्प ऑफ e-governance. So it also means e-democracy where all forms of communication between
electrode and electoral happen electronically or digitally. So हम proper interaction भी कर पाते हैं. Like अगर मुझे कोई query है तो वो भी मैं वहाँ post कर सकती हूँ और मुझे solution मिलते हैं वहाँ पर. Next we have the background that as you all know that India is a country of villages, and for overall prosperity, growth and sustainable development, ICT और governance ने बहुत important role play किया, जिससे आपने देखा कि अब सारी सर्विसेज लाइक एजुकेशन है, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, इन सब से रिलेटेड आप देख सकते हो डिफरेंट एरियाज में जहाँ पर ये सर्विसेज पहले नहीं मिलती थी, वो सब लाइक ऑनलाइन जैसे अगर हम बात करें तो विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस की हेल्प से हो पाया. जर्नी सो फार इन 1970 डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हुआ था. देन गोइंग टू दीज, सो यू हैव टू learn these years for your exams. Then the main one is the 2006 to 11, that is National E-Governance Plans, that is NEGP. Also from 2012 to 17 we had current e-government and the Digital India concept. We will see this particular topic also. So now about ICT and governance. The term totally focuses on new ICT, that is by government, as applied to the full range of government functions. So जो ई गवर्नेंस है वो बेसिकली क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट के फंक्शन है वो ऑनलाइन करवाना, आईसीटी की हेल्प से करवाना. सो दैट इज द लिंक. सो आईसीटी एक्ट्स इन स्पीडिंग अप द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन. जो इंफॉर्मेशन लाइक अब जैसे आधार है, आधार के लिए पहले हमें क्या होना था कि हमें लाइक जाना पड़ता था, विजिट करना पड़ता था, बट अब पोर्टल्स पे ही ऑनलाइन ही ऐसे पोर्टल बन गए हैं कि जहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हो. So we have types of government interaction in e-governance. We have 4 types, that is G2G, G2C, G2B and G2E. So let's see these one by one and the main parts they include. So first we have G2G. So ये जो है बेसिकली ये aimed at efficient file routing, quick search, retrieval of files, office orders, digital signatures. So इन सब से related काम करता है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. ई-ऑफिस प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइल मूवमेंट अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स. तो ये इसका एक एग्जाम्पल है. देन गवर्नमेंट टू सिटीजन में देखो इन्होंने क्या क्या हमें लाइक प्रोवाइड किया. इट ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ लाइक सर्विसेज टू सिटीजन्स लाइक भारत बिल पे, पासपोर्ट सेवा, सब कुछ के ऑनलाइन हो गया. ईपीआईसी दैट इज इलेक्शन कमीशन सर्विसेज, आईआरसीटीसी, ई पंचायत. सो इन दिस कैटेगरी यू हैव टू रिमेम्बर दीज नेम्स. दे कैन बी आस्क्ड लाइक एक किसी का भी नाम आ गया देन दे आस्क लाइक ये कौन सी कैटेगरी में आता है, लाइक गवर्नमेंट टू सिटीजन और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. सो दीज आर द पार्ट्स दैट कवर्स इन द गवर्नमेंट टू सिटीजन कैटेगरी. Then we have government to business. For business purposes government ने क्या क्या provide किया, like GST is the important one which you I think सबने सुना होगा इसका नाम. Then e-tenders, tenders जो भी थे अब ऑनलाइन फिल होने लग गए. e-gem, gem जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नाम से है, लोग इस पे भी काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक कोई परचेजिंग एंड सेलिंग है और टेंडर्स फिल करते हैं. देन गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट मॉडल पोर्टल्स. सो कई सारी चीजें हैं जो अंडर जो मतलब गवर्नमेंट को बिजनेस प्रोवाइड कर रही है. सो उसके लिए हमने इसको गवर्नमेंट टू बिजनेस कहा. नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय. एम्प्लॉय को गवर्नमेंट ने क्या क्या दिया, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, द ईपीएस ईपीएफ मॉडल. ईपीएफओ एंड प्रोविडेंट फंड्स आर कम्स अंडर दिस कैटेगरी. Now, what are the various benefits for ICT and e-governance? That increases accountability. It will increase transparency. Like साथ के साथ अपडेशंस आपको मिलती रहेंगी, आपको वेट नहीं करना पड़ता. Higher availability of public domain information. Corruption कम हो रहा है. Higher penetration due to automation. It will increase efficiency due to connectivity. Now, जो टर्म्स हमने देखी लाइक कब से कब तक क्या चीज आई, सो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल है. दैट इज फ्रॉम 2006 to 11 वी हैव
National E-Government Plan, that is NEGP. So here government basically जो ये है हमारा, इसके कुछ initiatives थे, like under NEGP we have initiatives like state-wide area networks which will use to connect all states, state data centers, common service centers, electronic forms through state portal, capacity building like implementation from city to village, e-district like जो भी इंफॉर्मेशन थी जैसे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से रिलेटेड, वो सारी ऑनलाइन होगी, वेब सर्विसेज जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, सोशल वेलफेयर, राशन कार्ड, तो ये सारी चीजें अब आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव करंट ई गवर्नमेंट दैट इज फ्रॉम 12th to 5-year plan, that is 2012 to 17. In this category we have create shareable resources for all government entities, like for what purpose? To deliver both information and transaction of government services. सारी की सारी गवर्नमेंट सर्विसेज आप देख रहे हो, मोबाइल के ऊपर भी है. देन टू प्रमोट ethical use of technology and data and create safe and secure cyber world, to increase all round awareness and create mechanism that promotes and encourages citizen engagement. Then we have to make available as much as data possible in public domain for the productive use by citizen. So we have many things under this category. Next one is the Digital India. So Digital India is a program of Government of India with a vision to transform India into a digital. मतलब हर चीज को डिजिटल बनाना हम डिजिटल इंडिया में इंक्लूड कर रहे हैं कि इंडिया में हम ट्रांसफॉर्मिंग कर रहे हैं हर एक चीज को ऑनलाइन करने की. सो फोकस इज ऑन बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव टू रियलाइज आईटी, और बेसिकली क्या है, मेनली मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू एनेबल चेंजेस करना चाहते हैं. सो इट इज an umbrella program, that means it will cover many departments. So here are the 9 pillars of Digital India. So first is the broadband highways, universal access to mobile connectivity, public internet access program, then e-governance, then e-kranti, information to all, electronics manufacturing, then IT for jobs, and the last is the early harvest programs. So for exam you have to learn these names as it can be asked like what are the like 9 pillars, तो नहीं पूछे जाएंगे, बट ये है कि कुछ pillars के नेम देके देन वो कह सकते हैं which comes under this category of 9 pillars of Digital India. Now the important key point to remember here is that the NEGP, that is National Governance Plan, it has been formulated by the Department of Electronics and the Information Technology, that is DEITY, and DARPG. So you have to remember these things, like NEGP has been formulated by which technology or which organizations, you can say, that is the Department of Electronics and Department of Administrative Reforms. Now we have some questions related to this topic. That is, the first one is, which of the following are included in Digital India? So Digital India की अभी हमने जस्ट बात की, वहाँ पर हमारे पास ई गवर्नेंस था, वाईफाई की बात हमने की, हमने प्रोडक्शन ऑफ आईटी और हार्डवेयर को बढ़ाने की बात की, ये नहीं था फ्री टैबलेट्स तो कुछ भी नहीं, हमने ऐसी बात की, और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एट विलेज लेवल. सो ये सब चीजें हैं, दैट इज 1, 2, 3 and 5. So this is the answer. Next, which of the following are programs under Digital India scheme? That is e-sign framework, National Scholarship Portal, BharatNet. So जहाँ जहाँ हमने e यूज कर लिया या नेट यूज कर लिया, that means वो Digital India का पार्ट है. That means all. Next we have, which of the following are the aims of Digital India plan of Government of India? First, formation of India's own internet companies like China did. Establish a policy framework to encourage overseas multinational corporations that will collect big data. ऐसा भी कुछ नहीं है. Connect many of the villages to the internet, yes, and bring Wi-Fi to many of the schools, public places, major tourist centers. That is the correct answer.
नेक्स्ट वी हैव डिजिटल बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर हमें कोई भी चीज डिजिटल बनानी है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो हमें ये सब चीजें रिक्वायरमेंट है. थैंक यू.